Okay, in this example, let's understand what is a first class function. Okay, JavaScript में देखना है हमें first class function क्या होता है. So it's very simple. First class function in JavaScript. It's a very good interview question also. Okay, first class function क्या होता है. So in general, if we are using, okay, if you are using function as a value, then it is called as, okay, it is called as first class function. Okay, कोई भी function को अगर आप value की तरह treat करोगे, then such type of functions are called as first class functions. And there are three examples in this case. उसके आप तीन ways से represent कर सकते हो. There are three ways to represent first class functions. Okay, what is the first one? First one says, okay, if you are storing a function in a variable, okay, in a variable, okay, then it is called as first class function. अगर आप कोई function जो है उसको एक variable में store करते हो, then it is called as first class function. Let's have an example. Script ले लेते हैं. तो एक variable declare करते हैं, variable by function which is equal to function without name. तो ये जो part है, this function which is without name, okay, it is also called as anonymous function. तो कोई भी function without name होगा, that is called as anonymous function. But ये function को हमने as a value यहाँ पे store किया हुआ. So ये variable में आप जो storage कर रहे हो, if you are storing something as a value which is acting as a function, तो ये function आपका first class function हो जाएगा. So ये हो गया आपका एक example of first class function. So I may say in console में लिख सकते हैं कि this is an example of first class function. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आप एज अ फर्स्ट क्लास फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं. तो कोई भी फंक्शन जब वेरिएबल्स में स्टोर किया जाए, देन सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास फंक्शन. और ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया. ठीक है. सेकंड, व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन फॉर फर्स्ट क्लास फंक्शन? if you are passing, okay, if you are passing a function into another function, okay, if you are passing a function into another function as an argument, then it is also called as first class function. अगर आप कोई function को दूसरे function में pass करते हो as an argument, तो वो function भी आपका first class function इसके यहाँ पे. okay, so let's say one function का नाम लिखते हैं my function 1. ओके, और ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास करते हैं. तो लेट्स से एक वैल्यू पास किया हमने 100 और एक वैल्यू पास किया 200 और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन पास करते हैं. सो नाउ ये एग्जांपल में आप देखोगे तो जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो एज अ वैल्यू आप फंक्शन को पास कर रहे हो. सो इफ यू आर पासिंग अ फंक्शन, ओके, इफ यू आर पासिंग अ फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन, इनटू दिस माय फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट और एज अ वैल्यू, तो ये भी एक फर्स्ट क्लास फंक्शन की तरह ही ट्रीट होगा. सो लेट्स से वेरिएबल ए जिसमें 100 स्टोर होगा, वेरिएबल बी, एंड आई विल से वेरिएबल सी. सो हियर सी इज एक्टिंग एज अ फंक्शन. तो यू मे प्रिंट दिस वैल्यूज क्विकली. तो ए प्रिंट कर लेते हैं, देन आई विल बी प्रिंटिंग बी. ओके, ये दोनों प्रिंट कर लेते हैं. एंड सी जो है, इफ यू सी द डेटा टाइप, अगर आप इसका टाइप ऑफ प्रिंट करोगे, okay, so what is c it is capturing your function which is acting as a value or as an argument, और c का जो डेटा टाइप है वो है फंक्शन. सो नाउ यू कैन यूज c एज अ फंक्शन. आप जो वेरिएबल c है, पैरामीटर c जो है, नाउ यू कैन एक्सेस एज अ फंक्शन. सो इमीडिएटली ये कॉल हो जाएगा. सो आई में से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास फंक्शन. एंड नाउ यू मे सी सिंस c इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन, और आप इसको चेक करोगे यहाँ पे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास फंक्शन. सो दैट इज योर सेकंड डेफिनेशन फॉर फर्स्ट क्लास फंक्शन. ओके, the last one says, if you are returning
function from another function as a value. That is also called as first class function. अगर आप कोई function के अंदर से दूसरे function को जब return करते हो, then it is also acting as a first class function. तो हमारे पास एक function है, ओके ये function का नाम होगा assuming my function 2, और ये function के अंदर से हमें return करना है value. तो you may return any value. Let's say हमने return किया number as 100. So this is called as a returning a value. अब ये वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, एरे हो सकता है, बट आई वुड लाइक टू रिटर्न अ फंक्शन. मुझे यहाँ पे एक फंक्शन को रिटर्न करना है. सो सिंस वी आर रिटर्निंग अ फंक्शन फ्रॉम एन आउटर फंक्शन, देन दिस फंक्शन विच इज रिटर्न, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास फंक्शन. सो ये फंक्शन जो है वो आपका रिटर्न हो रहा है यहाँ से. तो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ फर्स्ट क्लास function. So let's call my function 2. Okay, let's call my function 2 here. And in this case, I'm returning a function. तो ये function के अंदर से हम लोग return कर रहे हैं. So let's store this value in variable answer. And see the data type of answer. अगर आप यहाँ पे देखोगे type of answer, so obvious कि आपने यहाँ पे function return किया है, इसके लिए data type जो है उसका function होना चाहिए. Okay, and then you may utilize this answer as a function. और जैसे आपने आंसर अपने यहाँ से कॉल किया, you'll be having, okay, and this is what the answer is equal to first class function. So there are 3 ways to perform first class functions in JavaScript. So any function which you have stored in a variable, that is called as first class function. Any function which you are passing as an argument to another function, that is also called as first class function. So here in this example, this is acting as a first class function. And any function which you are returning as a value from another function, that is called as first class function. So that was a small story about first class function.